अस्सलामुअलैकुम। आइए आज हम बनाते हैं पालक के पकोड़े। और पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: बेसन 1 कप, घी 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च चॉप की हुई 3 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पालक चॉप की हुई 3 कप, बैंगन चॉप किए हुए 1 कप और प्याज हाफ कप। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इनका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अब हम एक पैन में घी गरम कर लेंगे और जब घी गरम हो जाए तो हम इनमें पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हमारे मज़ेदार पालक के पकोड़े तैयार हैं और हम इनको सर्व कर लेंगे।